Good morning. Today, as we have completed our story of the novel, we will discuss the study topics that are important in the novel. The Outsider as an absurd novel, European Arab relationship in The Outsider, the social, political, and historical context of The Outsider, image and symbol in The Outsider, theme of death or the world of man condemned to death in The Outsider, more so as the outsider or the stranger or the character sketch of more so or hero or anti-hero of the outsider. So these are the important topic in the novel. Next, as three terms, they are important: absurdism, nihilism and existentialism. ये हम डिस्कस कर चुके हैं and I have given you a detailed definition of these three terms: absurdism, nihilism and existentialism. Absurdism is the conflict that human being tries to seek value in the life, and this life is totally meaningless, purposeless and objectiveless. What the nihilism says? Nihilism means that this life, that it is without meaning, nothing. There is nothing in this life. And existentialism means that the human being, they have to survive. Existentialism means we cannot hold responsible society, religion, country, government for anything that for our life, and we ourselves responsible for our life, and we should try to find out the meaning from our life. So before discussion, the topic, the suggested topic, just look at this image, this concept. It is very much important in the novel, as I given the title Myth of Sisyphus. Many times in the exam, the question is as more so as the Sisyphus in the novel. So आपको ये पता होना चाहिए what is the story of Sisyphus. Sisyphus, that he was that character into the Greek mythology. जैसे आप फिगर को देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो पत्थर को ले जा रहा है, कि बाउल्डर को लेकर जा रहा है, ऊपर तक लेकर जा रहा है टू द टॉप ऑफ द हिल, एंड व्हाट हैपेंस, एकदम क्या होता है, दैट बाउल्डर रोल डाउन अगेन, और वो दोबारा से फिर नीचे जाता है. अगेन ही टुक दैट बाउल्डर, he again pushes it to the top of the hill and again it falls down. So this is that figure in that picture, that he is Sisyphus. He was given the curse by the death, the god of death. So what is the story behind this? That Sisyphus, he was a Greek hero, and as the time came, he was about to die, and death came to him to took him. First, as he was a hero, he chained the death. उसको ही जंजीर में बांध लेता है, and then came Ares, and he get free the death, and ultimately Sisyphus has to go with the death. But when he reaches at the Hades, the place जहाँ पर जो dead people हैं जाते हैं, तो वहां पर वो जाकर कहता है, my wife, that she has not performed the rites, proper rites after my death. उसने अभी तक जो करना चाहिए था वो नहीं किया था, so allow me to go to her, and so I want to punish her. So that's why the god of death permits him, so that he can order his wife, he can direct his wife to perform the rites. But that when he reaches there, cunningly he did not return back. वो वापस नहीं आता, refuse कर देता है वहां उस पर वापस आने से, and that's why he lives the life to the riper age, and ultimately when he grew old, he died. मर जाता है, फिर से जाता है वहां पर, and then death punish him. तो उसके लिए क्या punishment की जाती है कि that you have to do this activity, the routine activity daily, कि आप ये करेंगे, हर रोज आपका एक ही काम है, this boulder
यू विल टेक टू द टॉप ऑफ द हिल, और वो फिर गिर जाता है और फिर से सिसिफुस उसे वापस लेकर जाता है। तो दिस इज द कर्स ऑफ द डेथ। तो ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइफ ऑफ द कॉमन मैन ऑन द अर्थ। कि हम हर रोज, ऑर्डिनरी मैन क्या करता है, हर रोज हम यही जिंदगी जीते हैं। एवरी डे वी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वी डू आवर डेली रूटीन वर्क, उठते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसके बाद अपना पूरा दिन काम करते हैं, अपना लंच डिनर लेते हैं, एंड देन अगेन गो बैक टू द बेड एंड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड द सेम रूटीन। तो दैट द मोर्सो इन द नॉवल ही इज बीइंग प्रेजेंटेड एज द सिसिफुस। तो दैट उसकी पूरी रूटीन है नॉवल के अंदर। जैसा आप उसको ओपन करते हैं, या हमने स्टोरी भी डिस्कस की है, तो कैसी उसको एज हीरोइज्म नहीं दिखाया गया मोर्सो के अंदर। वो कोई हीरोइक हीरो नहीं है, वो कोई ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, वो कोई ग्रेट फिगर नहीं है। ही इज अ मॉडर्न ऑर्डिनरी कॉमन मैन। क्या कर रहा है वो डेली? वो सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेता है। ही वर्क्स फॉर द 5 days इन द सेम रूटीन। 5 दिन लगातार वो यही काम करता है। On the Saturday, on the weekend, he took a break. He takes his girlfriend. He goes to the sea beach. There he enjoy. They bathe there. They enjoy the sex. They again have a long sleep, and then he drink his coffee. He takes, and again the same routine. The next Monday दोबारा से वही routine start हो जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो you can relate it in this way. First, tell about the Greek mythology, and after that the life, the character of Morso. ठीक है, इसके बाद ये देखिए, myth of Sisyphus, an philosophical essay written by Albert Camus in 1942. In the essay, although Albert Camus ने भी essay लिखा है, उसका नाम भी है Myth of Sisyphus, and it was published in 1942. In the essay, Camus contended that life is inherently devoid of meaning and consequently absurd. कि life के अंदर कोई meaning नहीं है और resultant क्या है? It is absurd. But human being always search for the meaning. Camus compares the absurdity of human life with the situation of the Sisyphus. तो किससे compare कर रहा है कामू लाइफ को? दैट द जो सिचुएशन सिसिफुस की है, ग्रीक हीरो की है, उससे a figure of Greek mythology who was condemned to repeat forever the same meaningless task of pursuing a boulder up a mountain only to see it roll down again. Camus identifies Sisyphus as the archetypal absurd hero. तो जो कामू ने ऐसे लिखा है, उसमें जो उसने सिसिफुस की प्रेजेंटेशन दी है, that he is the hero, absurd hero and common, जितने भी absurd hero हैं वो उसी टाइप पर हैं, उसी कॉमन पैटर्न पर वो डिजाइन किए गए हैं, both for his behavior on the earth and both for his punishment in the underworld. He display scorn for God, a hatred for death and a passion for life. तो जो सिसिफुस है उसका क्या है? He has a hatred for death and a passion for life, and that's why he is doing that routine every day. As more so in the end, also when death is near to him, he again look back towards his life, and life somewhat appears him meaningful, somewhat attractive to him. His punishment, किसकी punishment? Sisyphus. His punishment is to endure an eternity of hopeless struggle. तो उसकी जो सिसिफुस है उसकी ये डेस्टिनी है, क्या डेस्टिनी है उसकी? कि that he has to he has to endure this punishment. उसको यही punishment suffer करनी पड़ेगी, that he again and again he is trying to take that boulder on the top of that hill. So similarly that human being, जैसा कि हमारा कैरेक्टर कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? मोर्सो कर रहा है कि एवरी डे ही जस्ट लिविंग द सेम रूटीन, एक ही रूटीन को वो जी रहा है,
और हर रोज वही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मोर्सो है और सिसिफुस है, देयर इज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन देम, एंड कामू प्रेजेंटेड दैट रिजेम्बलेंस इन हिज हीरो मोर्सो। तो मिथ ऑफ सिसिफुस आई थिंक क्लियर टू यू। इसके बाद जो है हम सजेस्टेड टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर दोबारा से आते हैं। ये देखिए, तो सजेस्टेड स्टडी टॉपिक, तो सबसे पहले मैं जो इसमें लूंगी दैट इज द आउटसाइडर एज एन एब्सर्ड नॉवल, इसको हम डिस्कस करेंगे। और वो जो अगली नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है। ओके बच्चे।